Right on Earth's magnetic field. तो अभी का मुझे इस पॉइंट को हमने एक बार डिस्कस किया था किसी क्वेश्चन को करते वक्त आप पूरा डिटेलिंग में देखना. This is the north-south axis. This is the axis about which Earth rotates. This north and this south are called geographic north and geographic south. लेकिन अगर आप एक बार मैग्नेट simple bar magnet, if you hold it horizontally in the horizontal plane, अपने को ऐसा देखिए. Let's say somebody is standing over here. This is the north and this is the south. The bar magnet, north pole and south. Now, if Earth is a magnet, which it is, the north, Earth के basically south pole की तरफ point करता है. But by convention, which is a wrong convention, people still are using that this is magnetic north. G for geographic, M for magnetic. ये जो नॉर्थ है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड सिमिलरली ये जो साउथ है यहाँ पर दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ बट योर मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ इज बेसिकली व्हाट साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट. इफ यू कंसीडर अर्थ एज अ बार मैग्नेट, तो ये अर्थ की बार मैग्नेट और अपनी जो बार मैग्नेट है दोनों इस तरह से अलाइन नहीं हो सकती. नॉर्थ इज गोइंग टू रिपेल द नॉर्थ. ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है. दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बट एवरीवेयर वी आर स्टिल यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन. देयर आर सर्टेन बुक्स एंड ऑल वेयर दे मेंशन दैट दिस इज साउथ, बट अभी आपके लिए इस तरह से बुक्स में चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं. दे आर स्टिल यूजिंग दिस एज व्हाट मैग्नेटिक नॉर्थ. Just draw the figure, we'll write this point also. This is a bar magnet, not Earth's magnet. It's an external thing. Right on this point, if a bar magnet is placed on the surface of Earth, such that it's free to move in the horizontal plane, such that it is free to move in the horizontal plane, then its north pole does not point
towards the geographic north of Earth. Its north pole does not point towards the geographic north of Earth. The point where it points towards is by convention called magnetic north. But as we know that north poles of two magnets repel each other, as we know that north poles of two magnets repel each other, magnetic north of Earth behaves as south pole of Earth's magnetic field. That is, सुनना क्या आने वाला है दैट इज के बाद तो किसी आदमी ने मैग्नेटिक नॉर्थ बोला होगा and you don't define all these things. तो अगर ये अर्थ की बाहर मैग्नेट है and you are writing magnetic north तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ नहीं चाहिए थी बाहर, लेकिन अगर आप यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देंगी, कहाँ जा रही होंगी, इनसाइड. That is means this, that is if somebody is standing on the magnetic north of Earth, if somebody is standing on the magnetic north of Earth, he finds that magnetic field lines instead of coming out enter this magnetic north. Instead of coming out enter this magnetic north. अलग से दिखा देना इस पॉइंट को, वैसे ही फिगर में बना रहा हूँ. अगर कोई आदमी और बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता तो ऐसे करता. ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से बाहर आ गई और साउथ से एंटर कर दी. अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा है. अगर आप नॉर्थ बोलते तो आप ये एक्सपेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. What you find that magnetic field lines they enter like this. And similarly, south पर आप क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, फील्ड लाइन अंदर जाएगी, लेकिन ये कहने के लिए मैग्नेटिक साउथ है. As such ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह से. And therefore field lines are coming out. Now this setup.
Write down angle of declination. What is the angle of declination? अरे सिंपल एरो के हेल्प से बनाएंगे, इतना सा बनाने की जरूरत नहीं। Here, this is the north-south axis, geographic north and geographic south. Somebody is standing at this point, and this is the bar magnet which he is holding. ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है. This angle alpha is called what? Angle of declination. इस angle of declination को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में? First draw this figure and then we'll write the statement also. Forget it. How do you define alpha? Let's say आप अर्थ पे खड़े हो. Let's say you're खड़े हो. Let's say this is north, geographic. That's south. Suppose somebody is holding a magnetic compass to the horizontal plane. बार-बार horizontal plane बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरे वाला vertical plane में भी रखेंगे उसको. If you hold magnetic compass in the horizontal plane, that means the spindle can rotate like this. Normally आप क्या expect करते हैं कि ये कहाँ point करना चाहिए था? North की तरफ. ये भूल जाना, ये horizontal plane है, सामने की तरफ north है. ये ऐसे point करता. ये हमारी expectation थी. लेकिन हुआ क्या? ये इधर point ना करके ऐसे कर रहा. मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऐसा बना दिया. एक्सपेक्टेशन ये थी लेकिन ये पॉइंट यहाँ कर रहा. अगर आप इस लाइन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते तो आप कहाँ पर पहुंच जाते? मैग्नेटिक नॉर्थ. इंस्टेड ऑफ रीचिंग नॉर्थ पोल आप कहीं कनाडा में हो. दिस deviation which you have at any point in terms of angle is called what? Angle of declination. Can you see that this angle of declination therefore is not a constant angle? It will depend on what? Your position, your latitude. अगर आप यहाँ पर हो, can you see alpha increase हो रहा है? अगर आप यहाँ पर हो, लगातार क्या होगा? Increase होगा. This alpha, if you know the value of alpha, you can decide your position of the earth, which is an important factor when we measure magnetic field. अब इस लाइन को डिफाइन करने के लिए कि बार-बार हॉरिजॉन्टल प्लेन को है, हालांकि हम बोलेंगे, हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया which is called plane of meridian. What is this plane of meridian? इस जगह पर जहाँ बड़े हुए हैं, and बोला this is north and this is south. Right at this place, if I ask you to erect a vertical plane, अगर यहाँ एक vertical plane आपने erect किया, just feel करना, एक vertical plane ये, इस vertical plane में कोई भी आप arrow बनाओगे, वो arrow कहाँ point कर रहा होगा? Geographic north. This vertical plane at any point on the surface of Earth is called geographic meridian. अब ये वाला जो plane है, कभी देखना,
This is the plane, we call it what? Geographic meridian. जब आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिमांड की गई तो वो आपको इधर नहीं मिली, वो आपको इस तरफ ना मिलकर ऐसे मिली थी. द प्लेन कंटेनिंग व्हाट? Magnetic north and magnetic south axis of Earth's magnet, that is called magnetic meridian. This magnetic meridian and geographic meridian, they are what? Planes. The angle between these two planes at any point is called what? Angle of declination. तो प्लेन वाइज बोलने का फायदा क्या है? हमारे लिए यहाँ पर ये प्लेन है, और आदमी को पता है स्फेरिकल है, और अर्थ पे कहीं और चले जाओगे, यहाँ ये है. जब आप यहाँ आओगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा और रोटेट कर रही ना, तो यहाँ वाले आदमी के लिए ये वर्टिकल होगा, थोड़ा और आदमी के लिए इधर के लिए ये वर्टिकल होगा. तो यहाँ पर मान लो ये अर्थ है, थोड़ी देर के लिए ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एक आदमी को खड़ा किया वो नीचे गिर गया, नहीं. नथिंग इज पुलिंग इट डाउन, और इसे इधर खींच रही. तो ये जो चीज कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? वर्टिकल प्लेन. एंड एनी वर्टिकल प्लेन containing geographic north and geographic south is called what? Geographic meridian. Write down the first point. इस angle of declination के लिए first point note करें पहले, geographic meridian. MERIDIAN. At any point on the surface of Earth, at any point on the surface of Earth, if a vertical plane is drawn such that it passes from axis of rotation of Earth. It passes from axis of rotation of Earth. Then this plane is called geographic meridian. Write down magnetic meridian. At any point on the surface of Earth, if a vertical plane is drawn such that the magnetic, or if a vertical plane is drawn such that it contains magnetic north and magnetic south of Earth, magnetic north and magnetic south of Earth's magnetic field, then this plane is called magnetic meridian. Angle between, next line, angle between geographic meridian
and magnetic meridian, angle between geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination. Angle between geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination. As we move towards as we move towards geographic poles, alpha, which is the angle of declination, increases. As we move towards geographic poles, value of alpha increases. If you wish, you can go like this. केवल समझने के लिए you can call it 2 alpha. इस पॉइंट का अल्फा था, यहाँ जब आप गए has become 2 alpha. अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में. राइट डाउन एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन. Angle of dip or inclination. अब इस angle of dip and angle of inclination को जरा समझना. अगर आपसे बोला जाए कि भाई अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, pointing towards magnetic north, then it is not correct. This is what you feel when you are holding a compass in the horizontal plane. किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इसका रफ आइडिया लेते हैं एंड देन कोशिश करेंगे 3D में उसे समझने की. थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखना है. अभी मैंने इजी बनाने के लिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बना दिया एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ. थोड़ा चेंज कर दिया, ज्योग्राफिक भूल जाओ. अब यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट कर दी. दिस इज आवर बार मैग्नेट. पहले वाली बार मैग्नेट थी वो छोटी वाली बार मैग्नेट कंपास या का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए और बार मैग्नेट. केवल समझने के लिए आपको पता है कहने के लिए नॉर्थ है क्या, और ये किस तरह का पोल है नॉर्थ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है, यहां से चलती और यहां से एंटर. Look at this point. Look at this point. मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ रही है. जो आदमी यहां पर खड़ा होगा उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन है, V फॉर वर्टिकल. उसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है H. जो आदमी यहां खड़ा हुआ है उसके लिए ये चीज क्या होगी V, और ये क्या बनेगा H. V और H समझ में आ गया. इसका मतलब क्या है,
थोड़ी देर के लिए मान के चलो अल्फा है ही नहीं, भूल जाओ, अल्फा जीरो है, इसी को ज्योग्राफिक मान लें, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो आई कैन से दैट दिस लाइन इज व्हाट इक्वेटर। नॉर्थ की इक्वेटर है वो क्या होगी यहाँ पर, इतना समझ में आता है। अभी जो इक्वेटर है दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हाफ एंड दिस इज कॉल्ड सदर्न हाफ। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ। तो अगर आप नॉर्दर्न हाफ में हो और की सरफेस पर खड़े आदमी को मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, तो somebody who is standing at the southern half below the horizon, तो उसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, अंदर की तरफ। हम लोग नॉर्दर्न हाफ में, लेकिन दोनों तरह से फील करते हैं। तो अगर यहाँ पर होते तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं दिखता, अपने को दिखता ऐसे बाहर आता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज व्हाट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर हम लोग सदर्न हाफ में होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा होता, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर जा रहा होता। तो हॉरिजॉन्टल से ये जितना एंगल बना रहा है दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एंगल ऑफ डिप, और यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये फिगर समझ में आ गया, इसका कंस्ट्रक्शन, ऑल मीनिंग्स ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑल दीस पर ड्रॉ करो एंड देन विल राइट सर्टेन पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है डिप, inclination. Don't forget to mention that this is Earth's bar magnet. ये साउथ मैंने इसका जो नेचर है वो दिखाने के लिए बनाया हुआ है। Earth's bar magnet basically behaves at the south. Write down this point. If Earth's magnetic field is considered to be due to a bar magnet placed between magnetic north and magnetic south, then magnetic field lines will intersect Earth's surface such that in the southern half they enter inside the Earth. In the southern half they enter inside the Earth, forming angle of dip. And in the northern half they come out from the surface of Earth. In the northern half they exit out or come out from the surface of Earth
thus forming angle of inclination. Thus forming angle of inclination. Both angle of dip and angle of inclination are taken from the horizontal. Both angle of dip and angle of inclination are taken from the horizontal. सुनना है इस पूरी कहानी को फिर से, and then we'll represent mathematical format. जो कंपास है वो ये नहीं है, लेकिन इससे भी काम चला लेंगे. Because the compass is transparent, so you can see it through. But अभी ये पहले मैं डिसाइड कर दूँ कौन कहाँ है. इधर मेन और इस तरह इधर हम लोग इक्वेटर के ऊपर है. विल कम बैक फॉर दिस. अभी कंपास मिल गया है, मुझे दिख रहा है. मैं चाहकर भी आपको दिखा नहीं पाऊंगा जो पॉइंट पर जाता हूँ, बिकॉज ऑफ वेट एंड ऑल. इतना हैवी है कि यहाँ पे काम नहीं करेगा. इसके अंदर ये नीडल दिख रही है, दिख रही होगी तुमको. बेचारी वेट की वजह से ऐसी हो गई है. अभी आपको लग रहा होगा ये खराब है. इट्स वर्किंग फाइन. It's working fine. Easily free, like free to rotate. Free to rotate. मतलब घटिया क्वालिटी नहीं है. The point is, this is the horizontal plane. This horizontal plane में magnetic needle ऐसे free है. If it is pointing in this direction, लोगों को लगता है कि magnetic field इधर है. But we have constrained its motion in this horizontal plane. While at this point magnetic field is pointing in this direction, it is coming out. तो ये बाहर आ रहा होता तो अपने को ऐसे आता हुआ दिखाई देता. Horizontal से जो इसका angle बनता, that angle will be called what? Angle of inclination. Let's call it theta. ये जो magnetic needle अगर मैं इस plane में रखता और अगर ये फ्री होती, क्योंकि ये नहीं है, it's not designed to be to rotate in the vertical plane, weight balance नहीं किया हुआ है, it's a cheap one in that sense. तो फिर ये जो needle होती, अभी ये इधर पॉइंट कर रही है, करना इधर चाहिए था इसको. तो वेट इशू है इसके साथ. ये जो मैग्नेटिक नीडल का एंगल दिखता आपको हॉरिजॉन्टल से, मैं आपको दिखा पाऊंगा most probably next law में I'll bring that one. I'll show it you. ये जो angle of inclination है, this is giving you actual magnetic field, provided you place the magnetic compass not like this, not like this. In which plane should it lie? In the plane of magnetic meridian. Geographic में नहीं, किस प्लेन में रखना है आपको? मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में. तो यहाँ पर मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है. देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही थी बाहर, ये बाहर आ रही है. ये बाहर आकर नॉर्थ से जाकर अंदर एंटर करेगी. तो जब ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे बाहर आ रही थी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. साउथ में चले जाओगे, South means southern half. तो ये ऐसा दिखाई देगा. This will be called angle of dip. Now, if I define at any point that Earth has two components, one is what? BH, and the other one is what? Horizontal component of Earth's magnetic field, vertical component of Earth's magnetic field, and I have measured these values in the plane of what? Magnetic meridian. इतनी नॉलेज
बिना किसी फिगर के हर आदमी के पास है कि जो बी टोटल होता है वो कितना आता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इन दोनों को यहां निकाला। हम नॉर्मल हाफ की बात कर रहे हैं। दैट्स योर बी टोटल, और इस बी टोटल के पास दो कंपोनेंट है, यहां से यहां तक इस बी एच, और यहां से यहां तक this is what, this is your theta, which is angle of inclination। अगर आपको दिख रहा है what is the value of tan theta, perpendicular component upon BB upon BH। We can write theta as tan or BB upon BH। This is theta, which is your angle of inclination or angle of tilt। Write down this, first write down the point and then write down this calculation। If a magnetic compass is held vertically, if a magnetic compass is held vertically in the plane of magnetic meridian, in the plane of magnetic meridian, then its needle points in the direction of Earth's magnetic field. Angle of this magnetic needle, angle of this magnetic needle with horizontal is theta, which is either angle of inclination or tilt, which is either angle of inclination or tilt. If horizontal component of Earth's magnetic field is BH, if horizontal component of Earth's magnetic field is BH and vertical component is BV, then now note down this much. Draw this figure, write down tan theta, and also write down total magnetic field. एक बार इस पूरी कहानी को फील करना कि वो क्या रहा है। जब आप कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हो ये इमेजिन व्हाट यू नॉट अलाउड इट टू मूव लाइक दिस। आपने केवल बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा। थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या रखना, यहां पर एक रोप कनेक्ट किया और उस रोप से आप ऐसे ही खींच रहे हो। ये जो खींचना है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर आप इस तरफ खींच रहे हो और ये नीडल यहां पॉइंट कर रही है, कैन यू विजुअलाइज, कैन यू फील ये रोप का टेंशन इसको कहां अलाइन कर देगा? इस तरफ। Now suppose somehow you allow this magnetic needle to also move in the vertical plane, तो ये immediately इस rope के साथ अलाइन हो जाएगी। ये रही तुम्हारी rope।
जो इस मैग्नेटिक नीडल को क्या कर रही है, अलाइन कर रही है. When you say that it can only move in the horizontal plane, जब आप इस मैग्नेटिक कंपास को इस तरह से पकड़ते हो तो ये नीडल थोड़ी देर तक ऑसिलेट करती है अलाइनमेंट के लिए. लेकिन अगर मैं एक बार अलाइन हो जाए, ऑन हो गई, इमीडिएटली आई डू दिस, जो मैग्नेटिक नीडल होगी कहाँ पॉइंट कर रही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो क्वेश्चन क्या आया, मैग्नेटिक कंपास इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ मैग्नेटिक कंपास इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, तो फिर जो टॉर्क लग रहा है नीडल पर, वो टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है. There are three options. If compass is held in the horizontal plane, जो टॉर्क है वो केवल किसकी वजह से ही काम आ रहा है, BH की वजह से, जो भी अलाइनमेंट एंड ऑल है. अगर मैं इस कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल इस तरह से, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑटोमेटिकली इज वर्टिकल प्लेन यहाँ रखूंगा, तो अब जो टॉर्क है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है. Write down these 2 points. You can expect short answer questions like this. जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ पहले से लिख चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज होकर आएगा इसलिए मेंशन कर रहे हैं. If a compass is held horizontally, if a compass is held horizontally, then torque on the needle is due to BH. And if compass is held vertically in the plane of magnetic meridian, if compass is held vertically in the plane of magnetic meridian, then torque is due to BH as well as BV, that is due to B total. H का भी असर है, B का भी असर है, ओवरऑल टोटल का असर है. लास्ट पार्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. लेट्स सी हाउ एक्टिव यू आर. जो अपना मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, कैसे कॉपी, जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन था, कॉपी कर देना. ये है अपना प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन. इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर मैं इस कंपास को रख दूंगा, तो और आपने को पता है मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट कर रही होगी, इन नॉर्दर्न हाफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड. It's a vertical plane. Can you see? This is also a vertical plane. लेकिन ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है. मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब उस प्लेन के साथ क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक. If you erect a vertical plane which makes an angle of phi with the plane of magnetic meridian, not this, like this. क्या बोल रहा हूँ, ये कंपास को ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिया मैंने, such that this new vertical plane makes an angle of phi, then find out angle of inclination or dip. Write down the question. If magnetic compass is placed in a vertical plane, if magnetic compass is placed in a vertical plane which makes an angle of phi with the plane of magnetic meridian, then torque is due to BH as well as BV, that is due to B total. H का भी असर है, B का भी असर है, ओवरऑल टोटल का असर है. लास्ट पार्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. जो अपना मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, इसको कंपास को रख दूंगा, तो और आपने को पता है मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट कर रही होगी, इन नॉर्दर्न हाफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स सी हाउ एक्टिव यू आर.
the plane of magnetic meridian, then find out new angle of inclination theta dash. Then find out new angle of inclination theta dash. You've got 20 seconds to answer this question. It's already late. टाइम नहीं है इधर नहीं बता दो क्यों बताने वाला है क्या? सर cos फाइव cos थीटा हो जाएगा। Which one? क्या चीज cos थीटा हो जाएगी? सर जैसे आपकी In terms of phi. cos फाइव b cos फाइव Which phi? Full. Phi of two. What is phi? What is phi? Angle between magnetic meridian and the new plane. Phi का मतलब समझ में आया? Phi मैंने क्या गलत लिखा दिया? Phi मैंने क्या लिखा है? वो angle between what? Magnetic meridian and the new vertical plane. ये लिखा है ना? अब इधर सुनो. तो टाइम ये मैं खुद कर दे रहा हूँ. लोग सोचते रहना क्या कर दिया मैंने. This is the plane of magnetic meridian. Plane of magnetic meridian का मतलब ये जो needle होगी वो किसके साथ align हो रही होगी? Actual magnetic field. उस वक्त उसका angle क्या बन रहा है? Which is given by this. मैंने बोला नहीं ऐसे मत रख, ऐसे रख. कितना रोटेट कर दिया मैंने? 5. इधर बताना कितने लोगों को समझ में आया? पहले आंसर लिख रहा हूं, बाद में समझाऊंगा. Done. 1, 2, 3. टाइम नहीं है इधर, टाइम की कमी है इधर देखना. इधर this is BH. Hello, this is BH and this is ये रहा total magnetic field. ये सेटअप ये है, ऐसे रखा हुआ है, ये चीज ऐसे दिखा रखी है. ना इमेजिन जब मैं इस प्लेन को इधर रोटेट कर रहा हूं, जब मैं इधर रोटेट करूंगा तो ये जो BH था, इस BH का अपने से फाई एंगल पर कितना कंपोनेंट बनेगा? BH cos फाई. और अभी भी तेरा वर्टिकल तो BV ही रहेगा. इसका मतलब जो नेट फील्ड है आपका, इस तरफ कितना फील होगा तुमको? BV divided by this new component which is what? BH cos phi. बस फिर से ट्राई कर रहा हूं इधर. Say blue is the BH and black is the BV. बार बार मैंने ये प्रेजेंटेशन यूज किया, ऐसे रखा हुआ है, दिखा दिया. ये था हमारा थीटा, टोटल फील्ड का एंगल. लेकिन अगर मैं इस चीज को रोटेट कर दूंगा यहां से इधर, फील लाइक दिस. ये था BH, मैंने इसे फाई रोटेट कर दिया तो BH का अपने से फाई पर जो कंपोनेंट बनता है वो क्या बनता? BH cos phi. अब तुम्हारे पास जो न्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आता है वो कितना आता? tan theta dash which is BV upon BH cos phi. You can verify the result also. Let's put the value of phi 0. What is cos 0? जब phi 0 करोगे इसका मतलब रोटेट नहीं किया था, फिर से लौट के थीटा डैश क्या बन गया तुम्हारा? थीटा बन गया. It's difficult to draw the figure and all, but I'll try. इतना नोट कर सकते हो करना. इधर अब ऐसे दिखा देना यार, और डिफिकल्ट है लेकिन कैसे ही बताऊं. ये था तेरा BH, हमने इस BH को इधर रोटेट कर दिया और ये क्या बन गया है? BH cos phi. ये रोटेट हो गया है phi. टोटल फील्ड is this. अब इस फिगर में मतलब बड़ी इधर ये है तेरा B टोटल डैश और उसका ये जो एंगल दिख रहा है, this is what? Theta dash. Can you feel this figure? BH क्या दिखाया फिगर में? BH दिखाया, BV दिखाया. फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट नहीं किया भाई, ये रोटेशन है.
रोटेशन इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रोटेट किया, रोटेट करते ही ये बन गया BH cos phi, BH cos phi. What is this line? Horizontal line. What is this line? This is again a horizontal line, remember. Horizontal का component क्या आ गया this much? Last 5 सेकंड की चीज, तुम आंसर देना। इधर मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 पर रोटेट कर दिया, कंपास नीडल कहां पॉइंट कर रही होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 पर रोटेट कर दिया, ये नीडल कहां पॉइंट कर रही होगी? नॉर्दर्न हाफ। Then you feel that it will be vertically up. Magnetic meridian में BH है, इससे 90 चले गए तो BH का cos 90 क्या आ गया? तो इससे 90 वाले प्लेन में केवल ऊपर खींचने के लिए कौन बचेगा? तो नीडल केवल कहां पॉइंट कर रही होगी? वर्टिकली अप। You can see that mathematically also. y अगर 90 करोगे cos 90 क्या हो गया? 0, something upon 0 infinity, theta dash कहां पहुंच गया? 90. Right on this last point, if magnetic compass is held in a vertical plane, if magnetic compass is held in a vertical plane which is perpendicular to the plane of magnetic meridian, which is perpendicular to the plane of magnetic meridian, then in northern half, magnetic needle will be pointing vertically up. Northern half magnetic needle will be pointing vertically up. Inside the bracket, phi is 90. Phi is 90. Therefore, theta dash is also 90. Phi is 90. Therefore, theta dash is also 90. Okay, next class.